अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम टू इरफान व्लॉग्स। और फाइनली हुंजा आया हूँ मैं। तो काफ़ी टाइम में इधर उधर दूसरे जगहों में जाता था, लेकिन फाइनली मैं हुंजा आया हूँ और आज मैं जाऊँगा बल्तित फोर्ट। और ये बल्तित फोर्ट का टिकट ऑफिस है, ठीक है जी, यहाँ पे। और यहाँ से आपको टिकट मिलेगा, देन उसके बाद आप ऊपर जाएंगे। ऊपर कोई गाइड है जी, आपको ऊपर गाइड मिलेगा जी, ठीक है। ये हमारे यहाँ से टिकट ऑफिस में अभी ये भाई है और ऊपर गाइड्स हैं हमारे पास। लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेस। तो जी, ये रास्ता यहाँ से ऊपर बल्तित फोर्ट की तरफ जा रहा है। और यहाँ से ऊपर सबसे पहले तो करीमाबाद ओल्ड सेटलमेंट आएगा, उसको हम ब्रिटिश के लैंग्वेज में खन बोलते हैं। देन उसके बाद उसके ऊपर फोर्ट है। अच्छा जी, तो सीन्स कुछ यूँ है कि अभी ऊपर बल्तित फोर्ट की तरफ हम जा रहे हैं और काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। आप हिल पे है ये रास्ते, इस वजह से सांस फूल रही है। और आज का जो मेरा गेस्ट है, ये कज़न है, ये मेरा मामू है राशिद। इनका होटल है यहाँ पे। जब भी आप आए तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो आप। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कांटेक्ट डिटेल्स डाल दूँगा। और अभी ऊपर जाते हैं, तो उसके बाद लेट्स एक्सप्लोर बल्तित फोर्ट। और जिन लोगों ने जाना है या इधर आना है तो आप घर से भी देख सकते हो वैसे बल्तित फोर्ट मेरे ब्लॉग से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी यहाँ पे एक 80 साल की एक बुज़ुर्ग है और यहाँ पर अपना बिज़नेस चलाती है और अभी भी खुद सिलाई कढ़ाई कर रही है। इनका नाम बीबी शुक्रत है। और यहाँ से आके इनसे आप चीज़ें ख़रीद सकते हो। बेशल मुतुम्बा यहाँ पे एक इनको एजाज़ भी मिला है हुस्न कारकर्दगी पे। तो यहाँ पे लगा हुआ है इनका पोस्टर भी। और ये एक अच्छी बात है कि हुंजा के अंदर जो वुमेन एम्पावरमेंट हम बार बार कहते हैं, उसका यहाँ पे एक इन दादी के शक्ल में एक प्रूफ है। अच्छा जी, तो जब भी यहाँ आते हैं, ये अल्तित खान हो गया, बल्तित खान हो गया, यहाँ पे हमेशा हमें सरप्राइजेज़ मिलते हैं। आज ये अभी यहाँ पे जो दादी थी, ये भी एक सरप्राइज़ था। 80 ईयर्स के एज में स्टिल शी इज़ अर्निंग और काम कर रही है ख़ुद से। तो ये वैसे हमारा एक एग्ज़ाम्पल है, खुशी हो रही है मुझे। और यहाँ से ऊपर अभी बल्तित फोर्ट है ये। और यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा सा क्रिएटिविटी है चेयर का। गेम ऑफ थ्रोन्स का चेयर यहाँ पे है। तो अभी बस फाइनली हम बल्तित फोर्ट के जो मेन रास्ता है वहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं। और जब हम ऊपर जाएंगे तो पूरा हुंजा वैली या नगर वैली हमारे बिल्कुल नीचे नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अंकल, कैसे आप? अस्सलाम। ये ऊपर फोर्ट आए थे जी जी। कोई गाइड है? ठीक है। वैसे ये हम भी ब्रुश स्पीकर है, ब्रुश की वाना नमी के ऐसे व्लॉग नगाने दा उर्दू से वनी नोसल बलिश्नु से। इसलिए मैं अभी अंकल को लगा कि हम भी इधर के नहीं है, तो मैंने अपने ज़ुबान में अंकल को बता दिया कि हम भी इधर के ही है। तो ठीक बोला अंकल। तो अभी हम ऊपर जाएंगे बल्तित फोर्ट के अंदर और इंशाल्लाह आज बल्तित फोर्ट का कंप्लीट हिस्ट्री आपको बता देंगे। तो हमारे साथ गाइड भी है, गाइड से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और मुझे जितना पता है वो भी आपको बता देंगे।
ये बल्तित फोर्ट है, ये इंट्रेंस है यहाँ पे बल्तित फोर्ट का, ठीक है। यहाँ से बल्तित फोर्ट का मेन दरवाज़ा है। तो यहाँ से जी ये ऊपर का रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, सीढ़ी है ऊपर। तो अभी सीन ये है कि जो मेरे साथ जो गाइड था वो चले गए, और यहाँ पे जो सामने गाइड है इनके साथ मैं अपना आगे डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यू करूँगा। So we are using water canals constructed over the centuries to irrigate this land. So now the apricot blossom is almost getting over, but only along the mountain line you will see still the apricot blossom is in progress. Go higher over there where these nice hotels are, you will see the Ladyfinger Peak also. There are several new hotels are being constructed on this hill. One of them became very famous because it had a unique name known as the Eagle's Nest. But then guards tower, the room for the guard. Nice living. Okay. Yeah, he has a museum. And how experienced horseman he is. That's the national sport? That is the national sport of Afghanistan, buzkashi. Sounds like a rodeo. Have you been to Afghanistan? No. No. I'd like to one day, but maybe not right now. Inshallah. Where do you live in US? Detroit. Hmm? Detroit, Michigan. Detroit, yeah. Michigan, I am. Michigan Lake. يا أمتنا شق الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك. يا أمتنا شق الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك. والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا هيك. والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة. We are having the photographs of Hunza kings, the emirs of Hunza, from left to right. This is the dynasty of Hunza kings, and that is another family known the Aga Khan, that is another dynasty. So let me start with the emirs of Hunza. He is Mir Ghazan Khan first, with strong Mongolian features. He ruled from 1863 until 1886. This was a critical time when Hunza and Nagar territory were under constant invasions of Maharaja Kashmir from 1840s onwards. But somehow, thanks to God, we were able to defend and resist successfully. It was in 1886, unfortunately, Mir Safdar Khan, he assassinated his father to get the throne. Later, the British were here and he lost, and subsequently he escaped to Chinese Xinjiang. His brother Mir Nazim Khan became the Emir of Hunza in September 1892, and then this was a peaceful time in Hunza. There were no more wars around, and he ruled until 1938. His son Mir Ghazan Khan II ruled until 1945, and this was the time when the entire world was engulfed because of the Second World War. But people here were very lucky. I think they had no idea what was going on in the other parts of the world at that time. In 1945, his son Mir Jamal Khan succeeded him as the king of Hunza, and he eventually decided to join Pakistan in 1947, in November 1947, and he ruled until 1974. Mir Ghazanfar is the eldest son who has been elected several times by the people of Hunza and who gifted this building to the public trust, and a lot of development has been carried out under his leadership. And we have a photograph of the wife of Mir of Hunza, Mir Ghazanfar. She was the president of all Pakistan Women Association, working for the betterment and rights and protection of women over the years. And they have 3 sons. The eldest one is Mr. Salim Khan, and in summers they return to Hunza, but in winters they go down to Islamabad. And just behind you, dear visitors, you will see several arms, like very traditional swords, battle shields, and daggers like that. Yes, please. We have these replicas of old Hunza flags, the bow and arrow and star and crescent. Old Hunza flag.
These are the replicas, naqals. Okay, And just because on the wall you will see a huge mountain sheep, a wild sheep that is called, we call it rush, but in general in Europe this is known as Marco Polo sheep. Presumably Marco Polo is the first Westerner to mention about such a bull-sized sheep in his travel account. The summer balcony, dear visitors, which is standing on wooden columns, and this was added to the structure after 1915. We are having some modern furniture like a folding chair, a telephone and sofas which are being restored again. Such modern features were added to the structure after 1891, I mean early 19th century. ये बाद में बना हुआ ये वाला जी ये पोर्शन. जी लिखा है इधर 1915 के बाद. ओके ऑलराइट, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ओल्ड फोर्ट नीचे है और ये बाद में ऐड किया गया है ये वाला जो साइड है. And now we go to the winter bedroom, please. The difference between The ruler family, the ruler, the prince, and the Aga Khan family. The Aga Khan were also politically involved or not? No, No? he's a religious leader. Not politician. No, he's the religious leader. Spiritual leader. Yeah. Yeah. Okay, dear visitors, you are in the winter bedroom. You see, it's a traditional Hunza house which has a fire. Is a hearth. This is called the hearth, where is a facility for making wood fire. You can sit around to the fire in the winters, enjoy your meals, and go to sleep at night on the floor in thick quilts. There is a cradle used often for baby nursing. And we have Holy Qurans written with hand. These are manuscripts from the past. And we have 2 cabins for dried fruits like dried apricots, walnuts, and also dried mulberries were stored in. Okay, now we are going to another room, please. Arturo. Yeah. I like this Colosseum in Italy. It's very beautiful. Sorry? The Roman Colosseum. The Roman Colosseum, yes, it is. It will be nice to build like that one again. Okay, dear visitors, you are in the winter bedroom, a tiny bedroom for the Emir. And on the walls you would notice a number of, we have a good collection of old photographs taken by Mr. David Lorimer between 1920s and 24. If you like to read something about Mr. Lorimer's life, his photograph is available here with the information. He was a British political agent in Gilgit station who took these photos showing you different features of the life of people of Hunza. Mr. David Lorimer is here. I have written something about his life there, what I knew a little bit. He was not just an administrator, he was a very brilliant man, a scholar who produced the first dictionary of native language, a grammar book and storybook. This is the road to Hunza before the construction of Karakoram highway. When we were coming on horses on the old Silk Road. Wow. This is Silk Road. This is what it is said to be. And Hashibe Bisbale. Wow. Shama Lair Bisbana. Gopija dost ben mala joshi mamduk tabay memche. अच्छा अच्छा. The video and never had thang Baba eras me patay bina thang bajite man. बिल्कुल. Jabo. Tali video ya patyar ruso. कोई में नहीं कहूँगा को किने Kine Zumkhan kine lady painting bila. okay, it's just a painting. These are paintings produced by adopting old photographs. And this is the poetry in Urdu language describing the grandeur and history of this fort. Mamu ठीक. Banji. ये सारा टुम्बा. Shabash. Kine Tumbai Gule. हमारे पास यहाँ पे एक लोकल गाइड है एजाज भाई, मैं इनको पहले से जानता हूँ.
बट ये मुझे जानता नहीं है, भूल गए होंगे, बट स्टिल इट्स अ गुड विजिट और इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं अपने व्लॉग्स के लिए. What is your hobby is? Traveling. Traveling. Yeah. Oh, this is nice. This is really nice. I really like it. Yeah. It's a little expensive, but it's the nice. Okay, dear visitors, you are in the interior assembly hall of the fort. Here you will see we have interesting artifacts on display, which are being gathered from different sources and donations by people. This area was used to attend the fort in case of bad weather, like a rainy day or hot sunny day. The Amir would be resting here with his important people to discuss the problems and also to settle the issues. We are having beautiful colored glasswork. This was an addition after 1900. 1800. 1900. You would see, and also we are having, which is more flat. And then they decided to settle down in Gilgit forever until 1947. But when the Brits were here, what was the role of the king of Hunza? Yeah. He, I mean, who had the rule? Mir of Hunza was given freedom to rule his own people, to maintain the same law and order like in olden days, Mhm. but he had no freedom to communicate with the neighboring empires of China and Russia. Mm. We used to have relations with them. This was stopped. So then the Emir was supposed to do what the British would tell him. So, no foreign policy. Yeah, no foreign policy and no. If you like to write or read something, we have a guest book here. You are most welcome to write something if you like. अच्छा जी, तो फाइनली विज़िट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और मैं अभी ये किंग के रेस्ट बेड पे बैठा हूँ, यहाँ पे आराम कर रहा हूँ थोड़ी देर. तो मैं फ़ील कर रहा हूँ आज हुंजा के किंग का जो रिलैक्सेशन था, यहाँ पे जो वर्किंग वाला फीलिंग है वो फील कर रहा हूँ. और बड़ा मज़ा आया. आज हमारे साथ फॉरेनर्स भी थे, उनके साथ हमने यहाँ पे व्लॉग बनाई. और ये समर्स रूम है किंग का, और यहाँ पे हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जो सामने लगी हुई है. और जो नेम Arturo. Altrud. Yes. Nice Meet to meet Altrud. He is you. from Italy? Switzerland. Switzerland. He's from Switzerland. Yes. Okay. You can watch my video on YouTube. Yeah, I will. Okay. So अब सीन ये है कि यहाँ से हम नीचे जाएंगे और नीचे जाके देन हमारा ये जो ट्रिप था बल्तित फोर्ट का ये एंड हो जाएगा. और मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, बट स्टिल मैं यहाँ पे मैं आया नहीं था. और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड बल्तित फोर्ट. एंड यहाँ का हिस्ट्री मुझे पता था, बट यहाँ पे आके मैंने कभी नहीं सुना था. तो बल्तित फोर्ट जब भी आपने आना हो, नीचे से टिकट लेना है, टिकट लेके यहाँ पर आना है. और इसका हिस्ट्री बहुत वाइड है वो, ठीक है. तो अब फाइनली सीन ये है कि यहाँ से अल्तित फोर्ट का एग्ज़िट है, यहाँ से नीचे का रास्ता है, ठीक है जी. ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से नीचे का फिर रास्ता है. छोटे छोटी यहाँ पे खिड़कियाँ हैं और यहाँ से सारा नीचे का रास्ता है. और यहाँ से ये बाहर नीचे का रास्ता है. और बाहर आते ही यहाँ पे उत्तर ग्लेशियर है यहाँ पे, और इस पहाड़ के पीछे यहाँ पे लेडी फिंगर है. और ये उत्तर ग्लेशियर का पानी आता है यहाँ से. और यहाँ पे नीचे जो है ना बल्तित का ओल्ड सेटलमेंट है. यहाँ से नीचे बल्तित का ओल्ड सेटलमेंट है. और ये यहाँ से एग्ज़िट के सीढ़ियाँ हैं, और ये इन सीढ़ियों से गुज़र के फिर नीचे जाना पड़ता है. तो अच्छा जी, तो सामने यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये तोप है, और इसको बोलते हैं हुंजा कैनन. ज़िलज़ला बोस ये है. ये फर्स्ट यहाँ पे एज आ इक्विपमेंट यूज़ किया था वॉर के लिए. और जब ब्रिटिश आए थे उनको ऊपर इसके थ्रू जब ब्रिटिश ने हमला किया था तब यहाँ से उनको भगाया था. और ये वो तोप है, और हुंजा का फर्स्ट तोप है. और ये अभी तक यहाँ पे एज अ एंटीक प्लेस किया गया है यहाँ पे बल्तित फोर्ट में. और ये हुंजा का फर्स्ट तोप है, ठीक है जी. अब यहाँ से नीचे जो है ना, ये नीचे एग्ज़िट है, और एग्ज़िट के बाद नीचे आपका यहाँ पे बल्तित खन है, ओल्ड सेटलमेंट ऑफ करीमाबाद. यहाँ पे नीचे ये पूरा का पूरा ओल्ड
सेटलमेंट है यहाँ पे। अच्छा जी, तो फाइनली हमने बल्तित फोर्ट का पूरा विज़िट किया और पूरा ब्रीफ उसका हिस्ट्री भी हमें पता चला। और जब भी आपको बल्तित फोर्ट आना हो तो आप यहाँ से मेरा चैनल देख के आ सकते हैं। और नीचे टिकट का भी मैंने बता दिया आपको। और काफ़ी अच्छा दिन गुजरा, यहाँ पे फॉरेनर्स भी मिले थे, यहाँ पे मोस्टली मिल जाते हैं हमें हुंजा में। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच।